topic of AC generator. So AC generator, AC means alternative current. So AC generator is a device that converts mechanical energy means they are doing some sort of work, some kind of mechanics, and that work is known as a mechanical because they are doing work done requires energy, and because of the mechanical energy that is producing some kind of electricity, and that electricity will be denoted as electrical energy using electromagnetic induction. So I hope you heard about this concept of electromagnetic induction, and you have any idea about the electromagnetic induction? I think so. It is when the direction of the magnetic field changes due to the change of the electrical conductor and the magnet, and due to this, and EMF is induced. Okay, yes. So electromagnetic induction is like induction is the process of generating an electric current or electromotive force. Yes, you just have to by changing the magnetic field around a conductor, and that will induce a current that will known as EMF. Very good. So there is a small lecture of AC generator. Basically, AC generator works on which principle? Which rule? The Fleming Yes, right hand. Fleming right hand rule. Okay. Okay, so we just have to find the AC generator is a device that converts kinetic energy into electrical energy. It is used in power stations to generate electricity that transmitted to our houses, industries, and the simple AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. This is the first point in our lecture, that AC generator, you have to write it down. AC generator is based on the principle of electromagnetic induction, because in this electromagnetic induction, when that coil is rotate, that is doing some sort of work, and that working is mechanical. Can you repeat it? So, Yes, okay. जी मैं बता देती हूँ. You have to write that it is based on it is based on principle of electromagnetic induction. principle of electromagnetic Induction. Yes, and what the electromagnetic induction? Electromagnetic induction is like when the coil does a mechanical, they do some sort of work, and that sort of work produce current, produce electromotive force, or maybe the current, and that when they produce current, they are producing, they call that current, alternating current in the generator with based on electromagnetic inertia, Fleming right hand rule. Okay. So we in your topic induction, further information on this principle can be found in the section of 4.5.1 in your textbook. In a simple AC generating, turning the handle causes the coil to rotate. Turning the handle and the handles, and these coils will start rotating. Okay, and the handle causes the coil to rotate. This interaction between the coil and the magnetic field lines induces a current when these coil is starting to rotate like this. Okay, I will show you the video after the class in which how the AC generator works, how the coil rotates and the field lines interact with that coil, and they induced a current and EMF to flow in the coil. Did you get the concept, Ayan? Yes. Okay, and the direction of induced current in the soil can be determined by the Fleming right hand rule. Okay, now this is a Fleming right hand rule for the first one. You can make a Fleming left hand rule in your hand. Upward thumbs, yes, this, but you just place it like the picture that is shown in front of you, the first picture. Okay, what is the direction of the current? Which finger will show the direction of current? The middle one. The middle one. And then which shows the direction of magnetic field? The
this finger shows Okay. the Okay. direction. So listen carefully now. The magnetic fields. Okay. Stop. Field induces a current and EMF to flow in the coil. The direction of induced current in the coil can be determined by following right hand rule. Thumb indicates the direction of force. Okay, thumb will indicate the direction of force or coil's motion. And the index finger indicates the direction of field, and the middle finger indicates the direction of induced current. Okay, you told this, the index finger will direction of magnetic field and the middle finger will show the direction of current. Okay, and the three fingers are always perpendicular to each other. This is the slip rings commutator and this is the carbon brushes. Okay, where is the commutator and where is the brushes? Here. These are the slip ring commutators and these are the carbon brushes. Okay, so are sliding contacts as the coil rotate. When the coil rotate, they make a contact as the coil rotates. The carbon brushes are at the rest and the slip rings reverse the direction of current every half turn. When the coil is vertical, this produces alternating current, defining the characteristics of AC. For example, these carbon brushes will rotate, and whenever they rotate, they induce the current and they reverse the direction of current, that is inducing inside the coil. Okay, and the electricity, the induced current and the EMF can be increased by turning the coil. For example, if you just starting the coil like 1 second, 2 seconds, 3 seconds, now you increase the movement, you just increase the speed of the coil, and in that way coil will start moving faster, and if coil start moving faster, current will produce larger. Okay, How so the current produce larger? if I increase the turning, if I increase the process of rotating this carbon brushes and the slip ring commutator, they will start continuously, they will increase their speed. In that way, current will increase, produce larger, because I increase the speed of coil ना. First one, जो contact है coil और slip rings के साथ, जी वो बिल्कुल, increase हो जाएंगे. हाँ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो इंड्यूस्ड हो रही है, करंट और EMF कैन बी इंक्रीज. जो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड हो रही है, जो करंट इंड्यूस हो रही है, जो EMF इंट्रोड्यूस्ड हो रही है, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे? टर्निंग द कोयल फास्टर. जो टर्निंग कोयल है हमारी, जो टर्न हो रही है, उसी कोयल को अगर हम फास्टर कर दें, उसके स्पीड को आप इंक्रीज करोगे. कहाँ से? ये पीछे कार्बन ब्रशेस से, कम्यूटेटर से आप इसको इंक्रीज करोगे तो कोयल की स्पीड इंक्रीज होगी. कोयल की स्पीड इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है करंट का फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ओके. So I hope till there you get the concept. As the coil rotates, the slip rings reverse and the direction of current every. For example, the direction of the current and the direction of the slip rings are, for example, coil rotates and this slip rings will reverse the direction of current. That coil will rotate and this slip ring will reverse the direction of current. Okay, every half turn, whenever coil turn half, reverse the direction, another half turn, again reverse the direction. When the coil is vertical, for example, I will show you the proper video. By looking at that video, animation video, you will understand it much better, because it depends on the whole practical. For example, if I draw it, this is now a हॉरिजॉन्टल पोजीशन ना. व्हेन आई प्लेस इट लाइक, जिसे हम लोग कहते हैं ना आमने सामने आ जाना. अभी तो बिल्कुल लेटी हुई है ना, लेटी हुई है. जब ये बिल्कुल आमने सामने आ जाएगी, जो नॉर्थ एंड साउथ है उसको फेस करने लग जाएगी, उसकी फ्रंट और बैक साइड, फिर उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. फिर उस हाफ टर्न में करंट आपकी इंड्यूस होकर रिवर्स हो जाएगी. फिर जब वो सीधी हो जाएगी, ठीक है, फिर उसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, यहाँ से समझ आ गई? Okay, very good. In a simple generator, turning handle causes the coil to rotate. अब ये देखें, turning handle causes the coil to rotate. These are the turning handles which cause the coil to be rotate, and this interaction between the coil and the magnet's magnetic field induces a current and EMF flow in the coil. Okay, did you understood this line? In AC generator, turning handle
causes the coil to rotate. These are the turning handles which help them to rotate, and the coil magnetic field induces the current and EMF to flow in the coil. So the induced alternating EMF current can be increased by turning the coil faster, increasing the number of turns on the coil, increasing the magnetic field strength by using stronger magnetic. You have to write these points, okay, and you have to remember these points, that how we can increase the induced EMF, induced current in our coil. These are the three best methods. By turning the coil faster, the coil is rotating na, just turn the coil faster. For example, in 1/2 turn it takes, in 1 minute it takes 1/2 turn. In that 1 minute you just give them to turn two turns, half turns. It will increases its speeds, and increasing the number of turns on the coil. For example, if you like increase the number of turns on the coil, that is also the best method. And increasing the magnetic field strength by using stronger magnetic. For example, if you just place a magnet that have a very strong magnetic field, a force of attraction, then they will produce a larger current. Did you get the point, Aryan? Yes. Sorry, okay. Yes. Good. Now, graph of the EMF against. I hope you learned the graph in this. Have you? Is it na? Yes, the graph is a very important thing. And I also checked the in past paper what about the questions. Question will like that this diagram will be drawn and you just have to solve it. Just give the calculation, or you just have to tell yes or no reasons, and you have to solve this graph as well. Okay, let's do this. The AC generator, the maximum EMF occurs when the coil is horizontal. Coil is horizontal now. Okay, this is the best point to remember. When the coil is horizontal, we have the larger data to get the generator maximum EMF occurs. In this AC generator, maximum EMF and current will be occur when the coil is horizontal. Why? Because this is because the coil's movement becomes perpendicular to the magnetic field. For example, it becomes a horizontal now, so the field lines become perpendicular with the coil and with the field lines. They are making exactly 90 angle, and that 90 angle will increase the induced EMF and the current inside the coil. Okay, and horizontal, this becomes the coil's movement becomes perpendicular to the magnetic field according to the Fleming right hand rule. The induced current flows into the page like here, into the page. You just have to get the colors pink, and other color is yellow and then red. Okay, listen carefully. Right hand rule in the induced current flows in the page in the pink coil and out of the page. Pink coil is out of the page. Why? When you have a Fleming left hand rule, that pink is like your middle finger, that is showing out of the page. Okay, and the yellow one, and out of the page in the yellow coil, the induced EMF then decreased as the angle between the coil's movement and the magnetic field decrease. The induced EMF is 0. When they become vertical, they are parallel. Okay, parallel means things becomes 0. Okay, when they are perpendicular, they are making 90s angle. So the coil vertical after 90s of rotation, this is because the coil movement and the magnetic field are parallel. The induced EMF then reverses due to the action of slip rings. So look here. So the movement and the magnetic field are parallel. This arrow, the coil, the movement of the coil and the magnetic field, they both become parallel to each other. Okay, and the induced EMF then reverse due to the action of slip rings. And the note that because the position of the slip rings, induced EMF will be reverse it. Okay, so the commutator, the induced EMF then increase to the opposite direction and reaches its maximum again when the coil returns to horizontal position. So when the coil like this, and then it will like this, when coil start to rotating from horizontal to parallel to horizontal, in every action induced current and induced EMF increases, decreases.
but in the opposite direction, in the reverse direction. Okay. तो जो बॉटम जो लाइन नीचे जा रहे हैं जी ये बता रहे हैं तो वो रिवर्स करंट है. हाँ, यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास ये करंट का ना ग्राफ बन रहा है कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, एक ये शो कर रहे हैं हमारे पास. ठीक है, इसमें क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेज, टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ डिक्रीजेज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग इंक्रीजेज. अब यहाँ पे ये नॉर्थ एंड साउथ के दरमियान है. ठीक है, हमारे पास एक ग्रीन ग्राफ आ रहा है और एक हमारे पास ब्लू कलर का आ रहा है. दिस इज द ग्राफ ऑफ द ईएमएफ अगेंस्ट द टाइम. टाइम का और ईएमएफ का आपस में जो अगेंस्ट ग्राफ बन रहा है, करंट का और टाइम का बन रहा है. ठीक है, अब एक जगह जब वो एक जगह रोटेट होती है, जब वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती है तब का ग्राफ है, और जब एक दफ़ा वो वर्टिकल हो जाती है ये तब के ग्राफ है. टू ग्राफ्स हैं, डिफरेंट ग्राफ हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एकदम से वो डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होती है, फिर यहाँ से वो डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होने लग जाती है इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द टाइम. ठीक है, जितना उसको टाइम रोटेट होने में लगता है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है. अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अब इसकी क्या है, ये इसकी है वो इसकी है ये हॉरिजॉन्टल है, वो मूविंग है, ये स्लिप रिंग है, और ये ऐसे रोटेट करेगी ना, फिर रोटेट करके यहाँ आएगी फिर यहाँ चली जाएगी. मतलब फॉर एग्जांपल आप अपना हैंड रखें ना ऐसे सामने कैमरे के, आप इसको स्ट्रेट रखें अपने हैंड को ऐसे सीधा, जिसे कहते हैं ना वर्टिकल. नहीं नहीं, हैंड फुल हैंड पूरा हाथ सीधा रखें, खोल के रखें. हाँ, मतलब जो आपका जो पाम है ना वो रूफ की तरफ होना चाहिए. नो पाम हाँ ऐसे फिंगर क्लोज करें, फिंगर्स क्लोज करें. अब आपकी लाइक फिंगर क्लोज, नो गैप बिटवीन देम. ओपन करना है हाथ, हाथ ओपन रखना है, फुल ओपन करना है यार. हाँ जी, फिंगर्स को बीच में गैप नहीं रखें ना. ओहो, क्या ऐसे? नहीं फिंगर खोल के रखें, गैप नहीं रखें बीच में, बस खोल दे. हाँ, अब ये जो आपका हाथ है ये बिल्कुल ये कौन सी पोजीशन में है, दैट इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है, अब हाथ को सीधा खड़ा कर दें ऐसे करके, मतलब वॉल की तरफ कर दें इसकी लोकेशन, लाइक कबर्ड की तरफ या वॉल की तरफ. नहीं हाँ ऐसे था, ऐसे कर दें. हाँ, अब ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया. तो ये जो कोयल है ना ये भी ऐसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. तो हर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में उसकी क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, उसकी करंट ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रही है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है. ओके, हर रोटेशन में डायरेक्शन डिफरेंट है. वो देखें यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे उसने बताया कि ये जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आपने वही जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया, जो थंब है वो फोर्स बता रहा है, ये इंडेक्स फिंगर आपको क्या बता रही है, इंडेक्स फिंगर क्या बता रही है, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी मिडिल फिंगर करंट. अब करंट कितनी है, आउट ऑफ द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड सामने जा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सबके सामने है. अगर आप खुद देखें ना, एक कोयल से दूसरे कोयल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है. करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन देखें क्या है, ऑपोजिट है. वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रही है, 90 का एंगल बना रही है. हाँ, उसी के नीचे वाला हाथ देखें, थंब फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई है, फोर्स नीचे लग रही है अब, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड अगेन फॉरवर्ड है, लेकिन उसका जो करंट है ना अगेन प्रीवियस वाले से, पिंक वाले से येलो की करंट की डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई है. देखिए कितनी ये एक चेंज हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी. ओके, ठीक है, वेरी गुड, आई होप यू गेट द आइडिया. ओके, नाउ अब थोड़ा सी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग एसी करंट की वर्किंग की. ओके, एसी जनरेटर की वर्किंग की. सो डिफरेंस, ये हमारा डिफरेंस तो नहीं हमने देखना, हमने की पॉइंट्स की कंपोनेंट्स देखते हैं एसी जनरेटर के. मैं आपके साथ दूसरा पीडीएफ शेयर करती हूँ. तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर. सो बेसिकली एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. So what does mean? Now look here, now that coil is rotating. Okay, I have the several picture in which they are showing that coil is rotating. Okay, and this is the description that how that coil will be change its location, its position, and in that changing its position, it also changing it in that by the Fleming left hand rule, it just reverse the direction of induced EMF and the current. But it always be parallel, or it always be
perpendicular. uh, Okay, so the simple AC oh, generator consists of a coil rotating about an axis between the poles of a permanent magnet and shown below, like this. Okay, now we have to put this as an ammeter. Ammeter, because we have to measure the current now. So when the yes, coil yes. rotates, it cuts magnetic field lines. When the coil rotates, it cuts the magnetic field line. So an EMF is induced. This makes a current flow through the coil. Now here is this point which is well enough to describe, to explain your whole lecture. Is it? Yes. As the coil rotates, each side travels upwards, downwards, upwards and downwards. Each coil is like they have the direction of upward, downward, downward and upward and so on. Turf the magnetic field so the current flows backwards, forwards and AC current is produced. For example, now if that coil is forward, then the current will be backward. If the current is forward, then coil will be backward. Okay? Okay. So the direction induced changes every half rotation of the coil, and this can be determined by the using Fleming's right hand rule. The end of the coil are connected to a pair of slip rings. The slip rings rotate with the coil and are in close contact with two carbon brushes. Okay, now look here. The स्लिप रिंग्स का फंक्शन क्या है? स्लिप रिंग्स हमारे पास क्या है, जो हमारे कार्बन ब्रशेस के साथ ऐसे अटैच हुई होती हैं, अगर कार्बन ने रोटेट करना होता है तो वो इजीली रोटेट कर सकती हैं. वो इतनी लाइक समझे यू कैन व्हेन द बारिश होती है तो रोड स्लिपरी हो जाती है ना, वी व्हेन वी वेयर शूज और वी बेयर फुट हम लोग स्लिप हो जाते हैं. सो दैट मेक्स अ स्लिपरी थिंग. द स्लिप रिंग रोटेट्स विद अ कोयल. स्लिपरी रिंग रोटेट करती है कोयल के साथ और वही आर इन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कार्बन ब्रशेस. सो इनका कार्बन ब्रशेस के साथ एक क्लोज कांटेक्ट होता है. ठीक है, आपने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो फेरेडेस लॉ एंड द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फेरेडे लॉ पढ़ा है इसमें? आई गेस नहीं ना. इसमें your Fleming's इस right hand rule यस वो यस मैंने पढ़ा. नहीं, मैं पढ़ा मैंने इसको. फेरेडेस लॉ नहीं. नहीं नहीं, ठीक है. वो इसी में ये बताता है ना कि द कॉन्सेप्ट एंड द वर्किंग ऑफ स्लिप रिंग्स एंड देन वर्किंग ऑफ कार्बन ब्रशेस इन द एसी जनरेटर. कि वो इससे कि हमारा जो जैसे हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा सारा काम होता है कि हमारा सारा जो प्रिंसिपल है एसी जनरेटर का वो हमारे किस पे डिपेंड है, किस प्रिंसिपल पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड है ना. हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है. तो जो स्लिप रिंग्स होती हैं ना एसी जनरेटर में, स्लिप रिंग्स एक सर्कुलर कंडक्टिव रिंग्स होती हैं जो कनेक्ट की जाती हैं एंड्स ऑफ रोटेटिंग कॉइल इन एन एसी जनरेटर. ये देखिए, ये हमारे पास एक एसी जनरेटर की विजुअल से पिक्चर है. ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर नहीं, यहाँ पे ठीक है. अब स्लिप रिंग्स जो है ना वो सर्कुलर कंडक्टिव रिंग्स हैं जो एसी जो कोयल की ना बिल्कुल एंड पे कनेक्ट की जाती हैं. दे रोटेट अलॉन्ग विद द कोयल, जो कोयल के साथ साथ रोटेट करती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल सर्किट, ताकि यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट कर सको आप एमीटर को कनेक्ट करके यू कैन find how much current is induced in that circuit, in that generator, in the AC generator. तो हमारे पास slip rings क्या होती हैं, that is attached with the coils and they help us to rotate that coil and they maintain the flow of induced current and help to connect the external circuits as well. Okay? और दूसरी हमारी एक जो चीज़ होती है ना कार्बन ब्रशेस. कार्बन ब्रशेज एक स्टेशनरी ब्लॉक्स होते हैं कंडक्टिव कार्बन मटेरियल दैट मेंटेन कांटेक्ट विद रोटेटिंग स्लिप्स. जो कार्बन ब्रशेज कांटेक्ट बनाते हैं किसके साथ, स्लिप रिंग्स के साथ. ओके, तो इनका पर्पस क्या होता है जी? Carbon brushes are used for the conduction of electricity. Yes, very good. Carbon brushes is transfer the current from the slip rings to the external circuit. वो ऐसा कंडक्टर होता है जिसके साथ वो कनेक्ट होता है, वो इजीली रोटेट कर सकती है. रोटेट करने के बाद जो करंट प्रोड्यूस होती है वो अपने अंदर से गुजार कर बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट शोज द appearance and the existence of current in that generator with the help of an ammeter. तो अब आपको समझ आ गया what is the concept and what is the purpose of slip rings and what is the concept of brushes. Very good. Yes. Carbon brushes. ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट
यहाँ पे एक और चीज़ थी जो कि बतानी थी. ये देखें, ये कोयल रोटेट हो रही है, slip rings and then carbon brushes. Look, this is a very good structure of AC generator. Slip rings inside the magnetic field. That magnetic field is going when they becomes parallel, when they becomes perpendicular. Now we have the carbon brushes, and these are the slip rings. These are the slip rings. Okay, these are the carbon brushes, and golden one are the slip rings. So when we have a slip rings, we the closed circuit, or maybe that is the closed circuit, you have a bulb. That doesn't matter, maybe you can use ammeter, maybe you can that bulb. If that bulb lights up, it's mean that it's producing a current. Okay, that is also the best example to measure that current is flowing or not inside the AC generator. So the direction induced current changes every half rotation of the coil, and this can be determined by you using Fleming left hand rule. I just told you about this, and this is the same. Now this is a graph for the voltage output against time for the simple AC generator. Now look here, now this is a like AC generator. When they move left, when they move right, when they move a vertical and horizontal, they produce graph like this. Okay, and this is the best graph of current, induced current and time. Induced current and time. Now below there is a boxes, vertical, horizontal, vertical and horizontal. Look, when they have a vertical, they have upward current. When they have horizontal, they have downward current. Vertical, again upward, and downward, then they have horizontal. Okay. Okay. And then this is an AC generator also. Simple AC generator consists of a coil placed in a magnetic field. Now this is a coil, magnetic field, slip rings and the carbon brushes. When the coil is rotated, it cuts the magnetic field and causes a change in magnetic flux. What does it mean by magnetic flux? The magnetic flux is the imaginary lines of the magnetic, the direction of the magnetic field. डायरेक्शन तो हमें पता होगी, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या? जो lines है direction of the magnetic fields are. मैग्नेटिक फ्लक्स इज द For example, टोटल, जो इसको arrows है, जी जी, जो वो है magnetic flux, because नहीं मैं बता देती हूँ मैं आपको. अगर आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द गिवन एरिया. एक मैग्नेट से लेके दूसरे मैग्नेट तक जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, डायरेक्शन की बात नहीं होती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपका स्कूल गेट है, यू हैव योर स्कूल गेट एंड देयर इज अ टू ओपनिंग गेट्स ना, वन इज स्मॉल एंड अदर वन इज बिगर गेट. आपको जब आपको छुट्टी का टाइम होता है, द गार्ड ओपन्स द बिगर गेट ताकि सारे स्टूडेंट उसी गेट से गुजर सकें. व्हेन दे ओपन द स्मॉलर गेट, दैट इज अ वेरी लो कैपेसिटी. जब पे उस सारे स्टूडेंट ने उस छोटे दरवाजे से भी गुजरना, बड़े दरवाजे से भी गुजरना. सो इन द गिवन एरिया, हाउ मच एंड हाउ मेनी स्टूडेंट कैन पास थ्रू इन दैट स्मॉलर गेट, दैट इज मीन एज फ्लक्स. नाउ वी हैव अ गिवन एरिया बिटवीन द टू magnet, north to south or south to north. So in that given area, how much field lines can pass through, that is known as magnetic flux. Okay, so you don't have to use magnetic fields, and again you can just mention magnetic flux. Okay, place in the magnetic field. Okay, when the coil is rotated, it cuts the magnetic field and cause change in magnetic flux. So the Fleming left hand right hand rule, this is a motion, this is a field, this is induced current, thumb, and this is a very important thing you have to remember, that our AC generator works on electromagnetic induction and it follows the rule of Fleming right hand rule. Okay, this is a graph, this is a best graph which is describing the induced EMF and the time. And this is in a picture again, and this is a graph separately. Okay, in this they are showing that the size of induced EMF depends on the number of field lines it cuts, and the induced EMF is maximum when the coil is horizontal. When the coil is vertical, it does not have that maximum field lines, and when the coil is horizontal, it has the maximum field lines and it will have a larger induced EMF. Okay, so these are for the horizontal. On the horizontal position, the change of magnetic flux is maximum. Okay, you can see that this is a large amount of waves
and on horizontal position the change of magnetic flux is maximum. On vertical position the rate of change of magnitude flux is 0. When they are parallel it's become 0. When they become 90 they have the larger flux. Okay, and one side of the coil cuts. So जब yeah 180 degrees then हाँ 180 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल 180 डिग्री उसको ज़ीरो कर देता है और 90 डिग्री उसको मैक्सिमम कर देता है. ठीक है, तो आई होप आपको एसी जनरेटर बहुत अच्छा समझ आ गया यार. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? no. If you have, you can just take your time and try to recall everything that we learned in this lecture and tell me if you have any question, any query, then we will discuss. Okay, or everything is clear? Everything हम past question solve करेंगे. जी जी बिल्कुल. So everything is clear in this lecture? So far so good?